The All India Muslim Personal Law Board has opposed the Uniform Civil Code. The Muslim Personal Law Board seeks mass support for dissent. Wants Muslims to be kept out of the purview of the Common Civil Code. Claims UCC against religious and cultural freedom. Prepares for political and legal battle. The battle lines are clearly drawn. War over common law is our top focus on India First. The Uniform Civil Code is neither necessary nor is it desirable, says the All India Muslim Personal Law Board in its draft letter opposing the Common Civil Law. The board has also sought another 6 months' time to file an appropriate response because they want to seek appropriate feedback. They want to seek legal opinion, consult legal eagles, and then revert to the Law Commission. But are these delaying tactics, or is there merit in the contention that Muslims, like the tribals, should be kept out of the purview of the common civil law? That is what the Muslims want. They say if you're keeping the tribals out, especially tribals of the northeast, out of the purview of the common civil law, then keep the Muslims out too. We debate that. I'm Gaurav Sawant. As always, let's get started with the headlines on India First. NCP factions flex muscle in Mumbai. Ajit Pawar camp says they have support of more than 32 MLAs. 13 MLAs rally behind Sharad Pawar. Ajit Pawar approaches the Election Commission, claiming to be the real NCP. Discontent in the Shinde camp over Ajit Pawar's inclusion in the Maharashtra cabinet. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde meets his party MLAs to allay their fears. As the fight for the real NCP escalates, Sharad Pawar camp's MLA Devendra Bhuyar switches sides, joins the Ajit Pawar faction. Bulldozer justice in Madhya Pradesh. House of BJP youth worker Parvesh Shukla, who urinated on a Dalit, demolished. NSA slapped on the accused. Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy meets Prime Minister Narendra Modi in the national capital. Sources say Jagan contemplating dissolution of the assembly and go in for early elections along with Telangana. The All India Muslim Personal Law Board has once again voiced its opposition to a common civil law in India. There was a marathon meeting of the board, and the Muslim Personal Law Body has sought wider support and wider consultation to voice its dissent. It wants minorities to be kept out of the purview of the common civil law, quite like the tribals. They want people to write a letter to the Law Commission voicing their opposition, saying common civil laws would be against the spirit of the Constitution that gives them freedom to follow their religion and their personal laws. The All India Muslim Personal Law Board has opposed the Uniform Civil Code, urging people to register their opposition and write to the Law Commission of India. The minority body held a marathon meeting on Wednesday and said freedom of different religions and cultures was under threat, with an environment being created for the introduction of a common civil law.
रिजर्वेशन कानूनी तौर पर जो लोग भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, वीक हैं, उनको रिजर्वेशन कानूनी तौर पे दिया जा सकता है और ऑलरेडी कई स्टेट्स में इसी बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया है। मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की बात कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि मुसलमान एजुकेशनली और इकोनॉमिकली और सोशली सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हैं, तो दूसरी कम्युनिटी के इक्विवेलेंट लाने के लिए रिजर्वेशन का रास्ता सबसे फुल प्रूफ रास्ता हो सकता है। The board has urged people to unite against one nation, one law, insisting Muslim personal laws are founded on the principles of Sharia and Muslims would not tolerate any modification to their personal laws. The law board is urging individuals to unite in a big way to express their dissent against the Uniform Civil Code. Apart from Muslim Personal Law Board, other Muslim organizations are also seeking legal opinion to mount a legal opposition to the common law. The draft letter says, the most crucial document of our nation, the Constitution of India, is itself not uniform in nature, prudently and with the intention to keep the country united. Different treatment, accommodation and adjustment is the nature of our constitution. Different religions have been given different accommodations. The Vishwa Hindu Parishad has hit out at the opposition to the common law. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या कोई अन्य संस्था हो, सबको अपना व्यू पॉइंट रखने का अधिकार है। सब अपने इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट रखें, इसके लिए लॉ कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला है और आपको 1 महीने का समय दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के व्यूज को आप प्रभावित करें, उसके ऊपर अपने व्यू थोपें। लॉ कमीशन चाहता है कि देश के सभी नागरिक इंडिपेंडेंट व्यू अपना रख सकें। Muslims want to be kept out of the purview of the Uniform Civil Code like the tribals of the Northeast. Sushil Modi, BJP MP and Chairman Parliamentary Standing Committee on Law, strongly advocated keeping the tribals out of the purview of the common law. रिफॉर्म्स इन पर्सनल लॉ, इस मुद्दे पर हम लोगों ने लॉ कमीशन को बुलाया है, भारत सरकार के मंत्रालय को भी बुलाया है। तो इतना ही मैं केवल कह सकता हूं, बाकी मीटिंग में क्या होगा नहीं होगा ये गोपनीय मुद्दा रहता है, सभी पार्टी के लोग रहते हैं, इस बैठक के बारे में से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। Prime Minister Narendra Modi made a strong pitch for one nation, one law. He was briefed by Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami on the progress made in Uttarakhand. आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? Opposition parties have repeatedly targeted the Narendra Modi government, questioning the timing of the UCC proposal. प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। कांग्रेस 140 करोड़ भारतवासियों, हिंदू, मुसलमानों, सिखों, ईसाई, आदिवासी, जनजाति और तमाम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की परंपराओं की हत्या नहीं होने देगी, किसी के धर्म पर कोई चोट नहीं आने देगी। हम ड्राफ्ट देखें, ये तो भाजपा सिर्फ पोलराइजेशन कराने के लिए कर रही है। The battle lines are clearly drawn. The centre is likely to push for uniform civil code in the monsoon session of Parliament. Bureau Report, India Today.
So the battle lines are very clearly drawn. The Prime Minister said, in one family, can there be two laws for two different members of the family? If not, how can the country function with two different sets of personal laws? Joining me on India First is Yasmin Farooqi. Yasmin Farooqi is the General Secretary of the SDPI. Zeenat Shaukat Ali is the Director of the World Institute of Islamic Studies for Dialogue. And Firoz Bakht Ahmed is the former Chancellor of Maulana Azad Muslim Urdu University. And Yasmin Farooqi, I want to begin by asking you, madam, All India Muslim Personal Law Board यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध आखिर कर क्यों रहा है? इसमें धर्म और आस्था कहां से आ जाते हैं जब ये सभी भारतवासियों को समान अधिकार देने की बात करता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो बना है वो मुस्लिम लॉ की हिफाजत के लिए बना है और मुस्लिम लॉ जो है वो अभी तक चला आ रहा है, वो एक संवैधानिक अधिकार है मुस्लिम्स का। मैं आपको यहाँ पे उस हिसाब से बात नहीं करना चाहूंगी, मैं एक प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगी। एकदम से एक ऐलान आप करते हो कि हम तो ये लॉ लाके रहेंगे किसी कीमत पे भी। देखिए, किसी भी चीज का एक तरीका होता है बात करने का, कहने का, लागू करने का। ये हमें सबको पता है कि संविधान में 3 लिस्टें हैं जो कि लिस्टेड हैं कि 3 तरीके से कानून बनेंगे। एक सेंटर बनाने का, राज्य बना सकता है, दोनों मिलके बना सकते हैं। आप इस तरह किसी चीज के लिए गैस लाइट नहीं कर सकते। आपको बनना है, ना आपने मसवदा तैयार करवाया, ना आपने कोई प्लान तैयार करवाया, आप पहले वो चीजें लाते। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पहले छोटी चीजों पे तो आप नजर डालिए। अभी वही प्रक्रिया तो चल रही है, नहीं, अभी कंसल्टेशन चल रहा है, लेकिन मेरे प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया। पहले ऐलान हो चुका। मेरा प्रश्न बहुत साधारण था। मेरा प्रश्न ये था कि अगर समान अधिकारों की बात है तो ये मुसलमानों पर कुठाराघात कैसे हो गया? ये मुसलमान के अधिकार कैसे लिए गए अगर सभी भारतवासियों को एक अधिकार देने की बात हो रही है, एक कानून देने की बात हो रही है? आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि ये कानूनी धर्म के लिए अपने धर्म के साथ निभाना कानूनी अधिकार है। ये तो आप अधिकार मानोगे ना। आप जब बात करते हो तो समान नागरिकता के लिए समान लोगों की बात नहीं करते हो। आप बात करते हो कि तलाक खत्म हो जाएगी, आपको गोद लेना पड़ेगा, आपके मतलब आपको जो आपका वो जायदाद वाला अधिकार है कि बराबर से देना पड़ेगा। मैं तो आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी को वही समान अधिकार मिले जो आपके बेटे को मिल रहा है? आप नहीं चाहेंगी कि मुसलमान बेटियों को भी समान अधिकार मिले जायदाद में? वही जवाब, उसी जवाब। मैं एक एक पॉइंट पे आपको अब आपका पहला पॉइंट है कि समान अधिकार की बात, मैं उस पे आपको दलील पे बताती हूँ। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में, मुस्लिम लॉ में 1400 साल पहले से लड़की का एक हक है, बीवी का एक हक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो कुरान है उसमें दिया गया है। अब आप आइए बराबरी के हिस्से। देश का कुरान से तो नहीं चलेगा ना, देश कुरान से तो नहीं चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं मुसलमान चलेगा। आप पूरी बात मेरी होने दीजिए। नहीं, मुसलमान देश के कानून से नहीं चलेगा, आप ये कह रही हैं। लड़कियों का हक नहीं था। 2 मिनट चलेगा, बिल्कुल। Let me get Zeenat Shaukat Ali. Let me get Zeenat Shaukat Ali. Let me get Zeenat Shaukat Ali. मेरी 2 बातें सुन लीजिए जी। इसको बातचीत में ही रखते हैं। Zeenat Shaukat Ali, if the uniform civil code is all about common law, समान कानून, आप Zeenat Shaukat Ali जी को समझाइए। ज़ीनत शौकत अली जी भी कानून भी समझती हैं, कुरान भी समझती हैं, शरिया भी समझती हैं, लेकिन संभवतः देश तो संविधान से चलना चाहिएगा। अगर मैरिज, शादी, तलाक, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, बच्चा गोद लेना, इन सब पर अगर कॉमन लॉ बनता है तो ये इस्लाम के क्या खिलाफ हो जाता है या इस्लामिक फेथ को अंडरमाइन करता है क्या किसी तरह? ज़ीनत शौकत अली जी, थैंक यू यास्मीन आपा। देखिए, आप जो कह रही हैं
उसका मैं एक छोटी सी तरीके से आपको जवाब देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज जो इस्लाम ने सिखाई है वो है अदल, वो है जस्टिस, कि सबको जस्टिस से आप देखो, सबको एक नजर से देखो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो लड़का हो, आप एक नजर से देखें। और आप जो अपनी कंट्री में जो अब जो डिस्कशन हो रहा है वो सब उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है, वो जस्ट लॉस पे है कि हर एक को अपना सम्मान सही तरीके से मिले। और ये जो है, ये जो हमारे मन में जो हो रहा है, ये हिंदू लॉ आने वाला है या दूसरा लॉ आने वाला है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। संबंध ये है कि हमारा लॉ जो है, देखिए हमारी लॉ में मोहम्मदन लॉ जो आप कहते हो, जो हम आप कहते हैं ना मुसलमान प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में, उसका नाम आपने मोहम्मदन लॉ दिया है कि सारे के सारे बुक्स उस पे लिखे गए हैं, इंक्लूडिंग तैयब जी, दूसरे मोहम्मदन लॉ, अमीर अली। जी आप देखिए मोहम्मदन लॉ इटसेल्फ इज अ मिसनोमा, क्योंकि मोहम्मदन लॉ जो है उसमें जो असल और इस्लाम का दिल है, इस्लाम की सच्चाई है, वो उसमें है नहीं। और ये हम इसके लिए कहते हैं कि देखिए जितनी सारी मखलूक है दुनिया में, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है, उन्होंने सब में ये यानी कि पर्सनल लॉस को उन्होंने बहुत गौर से देखा। और जी 1950 से ये सिलसिला चला, उससे पहले भी बहुत सारी चेंजेस आए हैं शरिया में, बहुत सारी बातें हुई है, क्योंकि फिका जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करता है, जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें डिविनिटी जो है, जो आप कह रहे हो, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और 200 साल से ह्यूमन फैक्ट्स पे रहते इंटेलिजेंस में वो लॉ बना हैं है। if common law is on marriage, divorce, inheritance, adoption, on personal laws, does the uniform civil code, Feroz Bakht Ahmed, in your appreciation sir, in any way, does it in any way either undermine Islam or take away, or does it actually take away the importance of this All India Muslim Personal Law Board? और इसीलिए कहा जा रहा है कि हिंदू सिविल लॉ आ जाएगा, वो यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं होगा। फिरोज बख्त अहमद साहब। Thank you so much, Gaurav ji. जी And I'm glad that you gave space to my two dear sisters who are now as panelists, and I heard the views of both of them. Both of them have all the right in the world to speak whatever they wanted. Now, you asked me a question: if Uniform Civil Code comes, if it is implemented, which is it has not been, still, the government is, in fact, the Indian Law Commission is asking for people's suggestions. Around 16 lakh suggestions have come, and based on those suggestions, a draft will be thrown to the people. It will come back to the people, and after that they will draft it. Now, your important question, Savant, is that will it impinge on Islamic laws? In all probability, I think, if at all any draft is going to be made, utmost care will be taken that no Islamic tenet, no principal tenet of Islam, not only Islam but any other religion, is going to be affected. No Islamic tenet will be impinged if this law comes into being. Of course, right, as Yasmin Farooqi Sahiba was saying, she had certain doubts. No, let me, you see, I am no authority to speak on behalf of Muslims, and she was taking the name of Muslim Personal Law Board. Now, Gaurav, Muslim Personal Law Board, in all probability, has no authority to speak on behalf of Indian Muslims. All right, it is just like an NGO, okay, but it cannot master any authority. These are the motley group That's of a people very who important point you make, sir. Very important point you make, sir. यास्मीन फारूकी, अगर पूरे भारत में एक ही कानून हो, हर भारतवासी के लिए, हर महिला के लिए समान अधिकार हो, शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत, वसीयत, सभी के लिए एक कानून हो, तो इससे इस्लाम या इस्लाम धर्म के मानने वालों की स्वतंत्रता कैसे खतरे में आ जाएगी?
आप मेरी बात को पूरी नहीं होने दी आपने। मैं अब हिंदू लॉ पे बात कर रही हूँ। नहीं, मैं आपसे ऑल इंडिया मुस्लिम, मैं आपसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका अपोज नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। आज नहीं, आप मुस्लिम क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड जाने और आप जाने और मुसलमान जाने। नहीं, तो मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, इससे महिलाओं के अधिकारों पर हनन कैसे हो जाएगा, वो मैंने आपसे सवाल पूछा है। तो मैं आपको जवाब तो सुन लीजिए, आप काट क्यों रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रही। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि मुसलमान महिलाओं का अधिकार कहां जा रहा है? आप सुन नहीं रहे हो, क्योंकि हम शरीयत को आप अवॉइड कर रहे हो। आप मुझे फिर बराबरी की बात करो ना। आप क्योंकि बराबरी की बात नहीं कर रहे हो, आप गैस लाइट कर रहे हो कि सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हो। क्योंकि आप आदिवासियों पे जब आते हो तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है। जब आप ट्राइबल पे आते हो तो वकालत करने लगते हो, सिखों के मामले पे आप वकालत करने लगते हो, फिर आप मैदान में आके जब ये स्ट्रांगली कहो ना कि सब पे लागू होगा। आप है ना, जो मिजोरम, आपके गुजरात और सारे उत्तराखंड वगैरह के जो कानून है वो भी बराबर होंगे। आप पहले उस लाइन पे आके बात करोगे तब आपकी बात को सच्चाई मानी जाएगी ना। आप अगर मुस्लिम को टारगेट करके सिर्फ उनकी बात कर, आप तो समान अधिकार की बात कर रहे हो, तो उसमें खाली मुस्लिम थोड़ी आएंगे, उसमें तो सब आ रहे हैं। जब सब आते हैं तो आप कहते हो नहीं नहीं सिखों की वकालत करने लगते हो, आप आदिवासियों की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है। नहीं देखिए, मैं दो टूक आपसे कह रहा हूं, आज विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। मैं आपसे उस पे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप दाएं बाएं का जवाब दे रही हैं, वो जवाब नहीं दे रही कि अगर मुसलमान महिलाओं को समान अधिकार मिले तो नहीं हूं। आप मुसलमान महिलाओं को समान अधिकार नहीं चाहती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपनी जवाब दे खुद है। Zinat Shaukat Ali, if countries like Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, if they can have very strong laws, why is it that it's only Muslims in India or some Muslims in India are opposing this? Because as Feroz Bakht Ahmed Sahab very rightly said, that All India Muslim Personal Law Board does not represent Muslims of India. Of course it doesn't. And there is no doubt about that. So the whole point is that this one nation, one law is very important. And I don't think why Muslims should oppose it at all. Because, you see, no law is exclusive. Opinions have been invited. You give your opinion and you see how your opinion can also merge and be taken into consideration, with justice and with fairness to all. So the whole point is that you see this kind of question that is being raised is quite surprising to me. That that one law, India one law can be detrimental or can be harmful to Muslims. I do not agree with that. And also I want to point out, Gaurav, that there are many Muslim organizations besides the Muslim Personal Law Board who have not entered into the fray. They said that we want to see the draft. Let the draft come out. If there are suggestions come in, when the draft comes out, we will. That is how. I mean, this kind of a reaction that we don't want this, and especially when there are matters in this that are going to relate to gender justice. Yes. There are many feminist groups in India who are Muslims, non-Muslims, other people also are saying that we are looking at that. So I think one law, one India, one law is will not undermine anything that Islam is saying. Interesting you say that. So one India, one law does not undermine anything that Islam preaches. Feroz Bakht Ahmed, practices like sati, devdasi, child marriage, all of them were removed from our society through very strong laws and strong implementation of laws. Yes. If other communities, if other communities are open to reform, is there merit that in All India Muslim Personal Law Board continuing to resist it, or some Muslims choosing to resist it, saying Islam khatre mein hai or their freedom to practice religion is in danger? Yes, well said, Savant. Let me tell you one thing. This law is not going to affect any of the principal practices of Islam. The only problem is that, so far as gender equity, gender equality, gender justice is considered, it will actually give this gender justice and equality to all the women, not only Muslim women, but women from
all the religions, whether these are Hindu, these are Parsis, these are Jains or Buddhists or Christians. This is a very important thing. Second thing is that as far as this law is concerned, first let it come. Yes. You know, unfortunately, when the Law Commission in 2018, it wanted some suggestions. It was Muslim Personal Law Board, if I am not wrong, you know, within, you know, they were the first ones to shoot off the block, and they said, no, we are against it. अरे भाई पहले देखो लोग क्या दे रहे हैं क्या है. अब 16-17 लाख 20 लाख लोगों की कल तक सजेशंस आ जाएंगी. ये हर चीज का ख्याल रखा जाएगा. जो हमारी बहन फारूकी साहिबा ने कहा है, अब जैसे इनको प्रॉब्लम हो सकती है एडॉप्शन से, ठीक है, आप अपनी सजेशन दे दीजिए. हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक नेशन है, सब चीजें कंसिडर की जाएंगी. अभी तो गाड़ी स्टेशन पे नहीं आई है यूनिफॉर्म नहीं, और फिर एक कि धर्म खतरे में है या धर्म की प्रैक्टिसेस खतरे में है, ये कहना कितना सही है? यास्मीन फारूकी जी, यही मैं पूछ रहा हूं आपसे. सती प्रथा एक कुरीति थी, कानूनन उसे बाहर किया गया. ऐसे कई कुरीतियां हटाई गई हैं. तो मेरी बात पूरी नहीं होने देते हैं. नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए. अगर इस्लामिक देशों में जैसे मोरक्को हुआ, अल्जीरिया हुआ, ट्यूनीशिया हुआ, लिबिया हुआ, इजिप्ट हुआ, अगर वहां मुसलमान महिलाओं को समानता का अधिकार मिल रहा है, तो भारत में अगर ये अधिकार मिले तो इसमें गलत क्या है? मैं आपसे एक सवाल ये तो करना चाहती हूं कि यहाँ डिबेट जो है वो आपके कॉमन उस पे सिविल कोर्ट पे है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे है? क्योंकि मेरे ख्याल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, इस पे हमें डिबेट नहीं करना चाहिए. मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ. एक बड़ा अच्छा लॉ है हिंदू लॉ में कि लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलता है जितना लड़के को विरासत में. आपसे मैं आज एक यहाँ पे चैलेंज करके कह रही हूं कि आप मुझे इसको प्रूफ करके बता दीजिए कि क्या लड़कियों के बराबर लड़कियों को बराबर का विरासत में हक मिला हुआ है. अगर तो आप मुझे ये चीज एनालाइसिस करके बता दीजिए ना, तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ वाकई ये सही है. नहीं, तो मिलना चाहिए. यही तो पूरी लड़ाई है. मिलना चाहिए, तभी तो कानून बनाया जा रहा है. जाती है, माफी करवा दी जाती है. अरे तो मिलना चाहिए. आप तो महिला हैं, आप खड़ी होइए उनके लिए. बता दीजिए, आप तो खड़े होइए. जीनत शौकत अली, you know, is there merit? Let everybody stand together for common laws and equal rights. इम्प्लीमेंट उसमें होता है कि नहीं, वो आपके बस का नहीं है. फिर जब मैं आदिवासियों की बात करती हूँ तो उनके कानून में क्यों नहीं बात होती है? कानून तो बनाइए. आप अभी से नहीं तो आप क्या सिर्फ मुसलमानों पे कानून बनाओगे आप? अरे तो ये कानून क्या केवल मुसलमानों के लिए बन रहा है? यही तो मेरा प्रश्न है आपसे. जीनत शौकत अली, प्रिसाइसली द पॉइंट. Is this law targeting Muslims, madam? Zinat Shaukat Ali, last 30 seconds on the show, ma'am. I think that is absolutely a misconception that has been, it's a misnomer completely. It is going to get all the women and all the men, equality and justice. What we are looking at is a common law that is going to get justice. और जो आपने कहा है कि हिंदू लेडीज को नहीं मिलता है, वो अब मिलेगा क्योंकि ये लॉ लिख के हो गया. It is going to be sealed, signed and sanctioned. So I will let that be the last word. I've run out of time on this part of the show, but this is a story and a debate we'll be tracking very closely. To all my guests, many thanks for joining me.